Hello and welcome once again to the last session on electromagnetism. And in fact, the UTAC 2022, the summer camp, which was aborted premature, will be finished today with the last part of electromagnetism. So before I start today, I would like to ask you a few questions. And maybe my colleague, Dr. Mishra, be watching remotely. He will be joining soon after I finish my portion, the revision portion. Now, we had discussed the principle of the force experienced by a conductor when it is, a current passes through a conductor or a charge moves, but inside a magnetic field, because the moving charge, the current will produce its own magnetic field, and the external magnetic field B naught will interact, and by that it will get a force, and that will be known from which rule? We have several rules. I have told you 3 rules where the force will be exerted on the current carrying conductor or a loop. Shall be taking the loop today. That will be best known from the right hand Tathastu rule or right hand Thapad rule. It is better than to use your left hand, and uniformly this will be reserved for current. This will be reserved for field, and this will be reserved for the motion, force exerted on that. But since we are using right hand, we'll be using this as the direction of the current, and the rest of the fingers is in the direction of the field. So the electric motor, particularly the DC motor, works on this principle. Faraday's, Fleming's left hand rule, or the right hand Thapad rule, that governs the DC motor, where it gives a continuous motion of the shaft, and whatever you connect with the shaft, fan blades or whatever, that will go on moving in a unidirectional manner, but you are using DC current. Motor is DC because it is using DC current, direct current, where the direction of the current is not changing. And it's very, very easy to understand that gote motor re kon parts thae. Gote hochi permanent magnet, north pole, south pole. Au gote coil, mu tara simplified diagram ta dekhuchi. Coil, ethare number of turns thae, gote nuo, and tar gote end, gote
गोटे याकू कहती स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर ये फांका अच्छे ये गोटे कम्यूटेटर S1 ये गोटे कम्यूटेटर S2 सेटा पूरा लगी ए आर्मेचर सांगरे लगी एवं आर्मेचर को शाफ्ट लगी सो शाफ्ट जो बुलुथिबो जो बुलिबो करंट जो पास करवा से मन को मन बुलिबो तो ये शाफ्ट सहित शाफ्ट रे लगी कौन ना पंखा ब्लेड एपटे लगाओ सेपटे लगाओ पंखा ब्लेड सो पंखा बुलला आम मुंड उपर फैन आसला तेणु यहाँ गोटे डीसी धर बैटरी यूज होची डीसी करंट पाइबा स्टेडी डीसी करंट पाइबा बैटरीटा हूँ वन ऑफ द बेस्ट राइट बैटरी which converts the chemical energy into electrical energy पाइलो ए डायरेक्शन रे करंट सब बेले गला now what happens because of the commutator half I mean split ring commutator फाळे एपटे से भी बुलुची commutator सॉरी आर्मेचर सांगरे से भी बुलुची केवल फिक्स्ड किए अछंती नाही ब्रश B1 जोटा टच करिवो गोटे हाफ साइकिल रे कम्यूटेटर S1 को टच करिवो एवं आउ गोटे हाफ रोटेशन रे से B2 को टच करिवो सो कौन हम ना धर यही कंडीशन रे अच्छी जस्ट बुझापी सुविधा एक्चुअली आरंभ है यही कंडीशन रु एमती धर क्लॉक वाइज रोटेशन होची एमती आसिला एंटी क्लॉक वाइज मत एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन टा भल लगे एमती आसिला से मोमेंट रे मु बुझेबा बेटर मने कली किंतु एटू स्टार्ट हम यही जगह रे यू नो कॉइल भितर करंट रो डायरेक्शन एटी चेंज हम एमती एटी एठू आरंभ हो गला ABCD डायरेक्शन रे करंट जाउची किए कहि परिबो जे काहे कि ABCD बिकॉज़ एठी जदी राइट हैंड थप्पड़ रूल यूज करिबा हमर डायरेक्शन ऑफ द फील्ड होची नॉर्थ टू साउथ करंट रे डायरेक्शन होची बुढ़ा अंगुठी मारिबा तळ आडू को तथास्तु करिबा कि ग्रा तथास्तु तळे करिबा सो एई पार्टटा तळ को जीवो एवं सेही रूल अप्लाई कले एई पार्टटा ऊपर को जीवो से गोटे टॉर्क पड़िबो सो बुल्ला से बुल्ला गोटे पॉइंट रे जते बेले फांका हे जीवो सेही पॉइंट रे ताधरे करंट किछि पास करिवोनी ए मोमेंट पाई बट यू नो इनर्शिया ऑफ मोशन विल जस्ट रोटेट इट सेपट को चली गले एमती एई मोमेंट रे करंट जीरो हे जीवो फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एमती आसी गले चलला ABCD 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 एटा मु देखैछि एई पोजीशन रे मु देखैछि सुविधा हबो मते थप्पड़ रूल यूज करिया पाई किंतु एठू कारण मैग्नेटिक जो मैग्नेट्स मानकर जो नॉर्थ पोल साउथ पोल एमिति कर्व करी करा हिची जे सब मोमेंट रे द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर तेणु 90 डिग्री हेले यू कैन यूज द यू नो आउ sin थीटा आसीबो नहीं खाली आमे करि परिबा लाइट हैंड रूल लोक कि 90 डिग्री रे हमर फोर्सटा पड़िबो सो चलला एमती थिला एमती आसिला बतन देखौची पुणी ए पर्यंत से ABCD चलला वर्तमान से समय पर्यंत S1 कम्यूटेटर B1 रे लागिची S2 कम्यूटेटर B2 रे लागिची सो करंट एमती फ्लो करची का भितरे ना लूप भितरे द मोमेंट एमती हे गला पर एमती हला देखी कि तो एमती देख मत देखिबा सुविधा हो कि एठू आरंभ हो गेलानी करंट रो डायरेक्शन लूप भितर उल्टी गलानी एमती देखी तो सुविधा करिया पाई जे एटा मध्य करंट रो डायरेक्शन आसुची से क्लॉक वाइज आसुची नो डाउट बट किंतु डायरेक्शन ऑफ द लूप देखियो गले आगुरु ABCD रे जाउथला एबे सेही प्रिंसिपल अप्लाई करले DCBA सो इनसाइड द लूप करंट रो डायरेक्शन चेंज होची हमर प्रिंसिपल एका सबु एका किंतु करंट आउटसाइड सर्किट रे कांस्टेंट आसु गोटे डायरेक्शन रे आसु एज ए रिजल्ट एटा बुलुची इन ए यूनिडायरेक्शनल मैनर आउ एमती 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 होनी एसी करंट यूज करले एमती 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 हबो किंतु हमर जो फैन बुलुची एसी मोटर same principle is little difficult. I mean, we will discuss about that. But it has a principle of a DC motor.
गोटे डीसी सोर्स यूज कर बैटरी यूज कर टर्न व्हील और फैन छोट छोट जो देखुच कुनी फैन सब अच्छी डीसी किंतु आमर जो पावर सप्लाई घर को आसुची सेटा सब एसी फैनटा बुलुची यूनि डायरेक्शनल भाबुच कोन एमिति एमिति बुलुची से तार प्रिंसिपल ईएमआई आज पढ़िबा सो जिंस इज वेरी सिंपल कंक्लूजन एटा मु लिखि देछि एठी कंक्लूजन हला डायरेक्शन ऑफ करंट in the external circuit remaining same can DC use korche the current direction changes after every half rotation and the armature rotates in the same direction split ring commutator does the magic split ring commutator does the magic से कम करछ सेपट को लागि जाउची so that पुनी CDB पुनी आर टर्न रे पुनी एपट को लागि जाउची ABCD so ता भितरे चेंज होची किंतु देखियो गले आमे जो देखियो ता भितरे सही क्लॉकवाइज एमती जाई कि करंट आस किंतु ता ना हो जाउची CDBA एपट होची ABCD करंट रा बाहर डायरेक्शन ता सेम अछि आ रोटेशन ता होची कोन ना यूनि डायरेक्शनल रोटेशन होची सो दिस इज वेरी सिंपल आमे वर्तमान गुड बाय करबा आ गुटे जिंस को आसीबा मैग्नेट रा आ गुटे जिंस को आसीबा एटा कोन मैग्नेट भितर मैग्नेटिक फील्ड भितर करंट पास कले कि चार्ज पास कले से जो फोर्स पाइबो इंटरेक्शन फल रे जो फोर्स पाइबो से विषय डिस्कशन कले ताकू व्यवहार करी करी आमे मोटर को पाई गले किंतु आमे जो करंट जनरेट करछे मोस्ट ऑफ द पावर जनरेटर रे केमिति जनरेट होची इट इज ड्यू टू EMI और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द मेन कॉज हमर जो घर को आसुची पावर सप्लाई तुम भाबुछ कोन बैटरी चलुची केमिकल रिएक्शन है कि बैटरी नो इट इज व्हाट इट इज बेस्ड ऑन EMI गोटे आर्मेचर चली धर हीराकुद डैम रे जो पानी पड़ुची से गोटे आर्मेचर तळे लागिची से आर्मेचर बुलुची मेकानिकल मोशन होची डन बाय द मूविंग और द फॉलिंग वाटर से आर्मेचर को बुलौची and that is generating electricity से ठीक उल्टाटा फाराडे कहले जदि मैग्नेटिक फील्ड ए करंट जदि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करि पारला गोटे करंट कैरिंग कंडक्टर रे मैग्नेटिक फील्ड अछि ताले मैग्नेट कोन पई करंट जनरेट न करि पारिबो से देखिले जे मैग्नेट ताको जदि आगो पछ करिवो जो मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a conductor जदि समय सहित परिवर्तन हबो एवं जेते अधिक रेट रे परिवर्तन हबो से कॉइल भितरे गोटे विद्युत प्रणोदित इंड्यूस्ड EMF विभवांतर सृष्टि हबो विद्युत प्रणोदित विभवांतर जो इंड्यूस्ड EMF हैला जो पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल प्रोड्यूस ए इंड्यूस्ड करंट प्रेरित स्रोत प्रेरित आपको प्रणोदित कहता प्रेरित विभव विद्युत प्रेरित विभव सो से इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस्ड करंट ही हमें भोगुचे हमें जो व्यवहार करूचे एसी करंट सेटा ताला ता विषय टिके डिस्कशन करबा मु सब फाइल दे देबी आ सार आसी जिवे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब मते प्रीतम देई छी आ वर्तमान सुप्रभा नायक का ना रे मां का ना रे पुआ अछंती नमस्कार देवी दत्त ब्रह्मा तमे दूर रे अछ सिना दूर पर्वत किंतु बहुत सुंदर गुड मॉर्निंग मिस्टर ब्रह्मा यू आल्सो आस्क योर क्वेश्चन देयर वी विल टेक अप नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कोन मु बहुत शॉर्ट रे तुमको बुझेबी कारण तुमे जो पिला भलो पिला एवं ए भिडियोटा will be watched by many in later times देखले आर्थर को 5-10 जण देखुथिलो एबे तो 200 पाखा पाखी व्यूअर्स हे गलानी so it will catch the attention of audience because we are discussing hardcore things by a lover of physics and by an expert of physics who will be listening there and who will be rectifying whatever mistakes that we will be doing, that will be rectified. So you already know जेतेबेले
गोटे स्थिर मैग्नेटिक फील्ड भितर जदि कॉइल टा मूव हो कॉइल भितर जो पास करूची फ्लक्स सेटा जदि नंबर चेंज हला किंबा जदि कॉइल टा को फिक्स रखिक मैग्नेट नॉर्थ पोल कि साउथ पोल को जदि पाखक नब पुणी दूर को नब पाखक नब दूर को नब तेबे ए कॉइल रे गोटे छाए छाए गोटे इंड्यूस्ड ईएमएफ बा प्रेरित प्रेरित विभवांतर सृष्टि हबो एवं ता जोगु गोटे स्रोत बाहरिबो यू नो बट जते बेले रिलेटिव मोशन जीरो हो जीवो सेते बेले आउ हबोनी चलेबा को पड़िबो और कॉइल टाको रोटेट करियो को पड़िबो सो दैट कंटिन्यूअसली यू नो द रेट ऑफ फ्लक्स इज चेंजिंग d phi by dt जीरो हो गला माने करंट जीरो हो गला सो देयर मस्ट बी ए चेंज ऑफ फ्लक्स विथ टाइम कमुथुबो पडुथुबो पुणी कमुथुबो पडुथु जाओ चेंज होथुबो सो सेटा इज इंपोर्टेंट एंड एटा को कोन हेछि ना गुटे स्थिर कॉइल भितरे साउथ पोल पूरा होइछि पुणी बाहर कराइछि पुणी नेक्स्ट रे ना नॉर्थ पोल पूरा होइछि बाहर कराइछि तेणु लेंजेस लॉ इज वेरी इंपोर्टेंट ताको बुझिबार टिके गंडगोल पिलांकर हेइ थाए देविदत्त ब्रह्मा good morning to you for the Zoom session that you have chosen that's good now what is Lenz's law is very simple that तुमे जोटा करिबो that will be opposed by the induced field the magnetic field created by the induced current सृष्टि हेले से भी गोटे magnetic field create करिबो and same magnetic field will oppose what that is most important the change of field delta b impan impressed माने जोटा को तमे फील्ड टाको चेंज करूचो गोटे मैग्नेट बुलाउचो तो चेंज करूचो फ्लक्स बढ़ुची गोटे कॉइल रे फ्लक्स बढ़ुची किबा कमुची से जो चेंज होउची ताकू से अपोज करिवो it's not it will change the impressed field the change in the impressed field which produced it right hand thumb rule अनुसार तमे induced current रो जो प्रोड्यूस होची जो induced field तार डायरेक्शन तुम बाहर करि पारिबो राइट हैंड थंब रूल यूज करिकरी सो धर इट्स वेरी सिंपल तुमको पचारि मु तमे कहिबो the induced magnetic field opposes the mechanical motion of the moving magnet by attraction or repulsion एटा बुझी गले सुविधा हबो देखो धर नॉर्थ पोल टा you will bring near to a coil now देखो magnetic lines of magnetic field lines उडा का नॉर्थ पोल रु बाहरुची तापर कर्लिंग हे जाउची एपट को जते पाखु पाखु नबो the flux linked with the coil will be more and more and more so jodi arbitrarily ame ei negative जो बां पटोटा को पॉजिटिव डायरेक्शन नबा आमो इच्छा ame मु लेखि एठी towards the left is assumed to be positive direction एटा कार b रो देखिबा डेल्टा b रो डायरेक्शन टा कोन we are interested in delta b change माने फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट वर्तमान धर नॉर्थ पोल टा एटी थिला आउ टिके पाखु को नबो आ फ्लक्स बढ़िबो फ्लक्स बढ़िले फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़िबो सो व्हाट इज द डेल्टा बी हायर माइनस लोअर इज पॉजिटिव डायरेक्शन टा को जदी एटा धरिथिले बढ़िबाटा को ए डायरेक्शन टा कमिबाटा को अपोजिट डायरेक्शन टा टुवर्ड्स द राइट सेटा होची कमिबा फ्लक्स कमिबा फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल डिक्रीजेस सेटा होची राइट टाकू आमे लेफ्ट टाकू नेइचे पॉजिटिव डायरेक्शन आमो इच्छा दैट वी हैव अस्यूम्ड सो डेल्टा बी जदी डायरेक्शन टा पॉजिटिव ए डायरेक्शन रे रहिला सिस्टम चाहिबो माने कॉइल चाहिबो मु एम्प्टी डायरेक्शन रे करंट सृष्टि करिवि इंड्यूस्ड करंट सृष्टि होबो सो दैट इट विल अपोज द डेल्टा बी सो डेल्टा बी रो डायरेक्शन जदी याडे पॉजिटिव ता माने इंड्यूस्ड करंट रो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो इंड्यूस्ड फील्ड रो डायरेक्शन ता याडा हो
तो डेफिनेटली तमे राइट हैंड थंब रूल यूज करी एमती करी तमे कहि परिबो जे एमती आसुची एमती आसुची एमती राइट साइड रो देखिले एंटी क्लॉकवाइज so that you also know that solenoid will produce a magnetic field whose north pole will be on the right side. So एटा north pole हे जिवो कहार ना the induced field रो जो magnet सृष्टि करूची electromagnet तार north pole एटा हे जिवो एटा south pole हे जिवो तो ultimately repulsion जोगु mechanical opposition मध्ये रहिबो सेटा बुझिबा के तुम सुविधा हो एठी नॉर्थ पोल हेले तमे तमे माडी आसुचो नॉर्थ पोल को नेकरी माडी आसुचो सो दैट करंट एमती डायरेक्शन रे सृष्टि हबो जे एई पटटा नॉर्थ पोल हबो सो दैट द मैकेनिकल effect that you are producing by moving the north pole towards the coil that will be opposed by repulsion पड़ा तो काई आसु or in the other way डेल्टा बी रो डायरेक्शन जो डायरेक्शन तार ऑपोजिट डायरेक्शन रे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हबो सिमिलरली तब जदि नॉर्थ पोल टा को नै जिवो दूर को अवे फ्रॉम द कॉइल तो द नंबर ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल विल बी रिड्यूस्ड सो फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल हला 10 टा आगुरु थिला 20 टा तो 10 माइनस 20 नेगेटिव हला कमुची माने ए डेल्टा बी रो डायरेक्शन टा होची एमथी देखो डेल्टा बी रो डायरेक्शन टा होची नेगेटिव माने आमे राइट साइड को नेगेटिव नउचे प्लस साइड को लेफ्ट को नउचे राइट को नउचे नेगेटिव लेफ्ट को नउचे पॉजिटिव सो दैट जदी डेल्टा बी रो डायरेक्शन टा हला नेगेटिव माने टुवर्ड्स राइट तबे इंड्यूस्ड फील्ड रो डायरेक्शन हबो टुवर्ड्स पॉजिटिव टुवर्ड्स लेफ्ट. So definitely, you know, according to a right hand thumb rule, आमे जानी परिबा जे करंट जाउची ए डायरेक्शन रे आमे जदी बां पटे जाई देखिबा एंटी क्लॉकवाइज आछी सो बां पटटा हबो नॉर्थ पोल of the induced magnet I mean and this is हबो साउथ पोल so that से कहबा हे को जाउछु काहे की तू जाउछु काहे की तो जिबा मोशन टा को से अपोज करिवो एठी आसुथला बेली ताको तो जा 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 एठी जाउथला बेली करे आ ताको टाणीबो सो देयर विल बी अट्रैक्शन सो दैट द मैकेनिकल जो ये होची मोशन टाको से अपोज करिवो बाय क्रिएटिंग द पोल रिक्वायर्ड एठी एका पोल हैला कारण तुम आसुचो बेली से अपोज करिवो माने तू जा पळा एठू काई आसुचो एठी एठी कोन से आसुची बेली ए सॉरी पळौची बेली तू काई पळौचो आ मैकेनिकल मोशन जदि जाउची ते टाणीबो आसुची विदा करिवो सेम थिंग विल हैपन हियर बेले साउथ पोल टाकू गुड मॉर्निंग डॉक्टर मिश्रा प्रोफेसर मिश्रा जेते साउथ पोल टाकू मुटिके गोटे साउथ पोल टाकू जेते बेले तमे लूप निकट को नबो सेते उल्टा हबो नॉर्थ पोल रे नेले डेल्टा बी माने फ्लक्स लिंक्ड फ्लक्स बढ़िबो द साउथ पोल को नेले लिंक्ड फ्लक्स कमिबो कारण एटा पसुची आ भितर को साउथ पोल भितर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पसुची तणु सेटा नै गले डेल्टा बी डेल्टा बी रो डायरेक्शन टा जदी पॉजिटिव हैला तबे अगेन इट विल ट्राई टू अपोज इट सो एटा ए डायरेक्शन एठी जा हितला नॉर्थ पोल को पाखु को नबा जा हितला साउथ पोल को दूर को नबा एग्जैक्टली से हला एमती हला सो दैट एटी नॉर्थ पोल डेवलप हैला एवं से जो नै जाउची ताको कहला जो जाना तो आ द मैकेनिकल मोशन को अपोज कला you know to better understand एठी तुमे जदी बुझिबारे असुविधा हबो केमिति you know साउथ पोल टा को दूर को नेले केमिति लिंक्ड फ्लक्स विल बी मोर सो दैट डेल्टा बी रो डायरेक्शन टा केमिति पॉजिटिव हैला जदी बुझिबा को असुविधा हबो देन यू गो फॉर मैकेनिकल मोशन साउथ नॉर्थ पोल टा को भीतर को नेले you know मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन टा ए आडे तेनु पडुची किंतु एटा नेले माने एटा जते जते नबो नबो सेते सेते
एमती बुलिकरी फ्लक्स बेसी लिंक्ड हबो. As a result, delta B will be positive and it will remain to the left, so that the induced field will be remaining to the right, so that it will be also producing anticlockwise with respect to right side. North pole will be here. Same thing will happen as you found that north pole ku jete tame dure no thilo jo jinso houtila south pole ta ku pakhei nele, you know, the number of linked force will decrease because of field direction ta mane field guda chali astundi. So the linked force magnetic lines will decrease, so that delta B ro direction ta negative habo towards the right, so that according to Lenz's law the induced field will be positive, I mean to the left, so that co direction re kale ame paiba na empty clockwise with respect to anti-clockwise with respect to the left position. So left position ta habo north pole, eita habo south pole. As a result, se tu pakhu ku nei ascho kobe ja tu asna. So the mechanical force, a mechanical motion will be opposed by the induced magnetic field. So that is the thing. So mu tomuku pacharibi north pole pakhu ku asile kon habo, north pole pakhu ku asile north pole create habo induced field ray, so that there will be repulsion, and you know current direction ta tame jani paribo anti-clockwise with respect to the right, and the south pole ta dure nabo exactly seya habo, but this time repulsion, this time attraction. Eti nei gala mane linked you know buli ke aschi na, the linked magnetic lines will be more, delta B will be positive. So a direction re delta B hele, a direction hele say anti-clockwise to the right side habo, and north pole will be created here, and the mechanical motion will be opposed because of attraction to jana. Opposite thing will happen if you bring a north pole near to the coil. There will be attraction, you remove the north pole away from the coil, there will be attraction, delta B negative, so induced field positive. And when the south pole is brought near to the coil, then there will be repulsion between the two poles, and the direction of the change in magnetic field is negative, and the induced magnetic field will be positive. Etiki bujhi gala pore amra kichhi nahi. You can just see, let me drink a glass of water and you just have a look. You might have seen 1,000 times. I give you a 1 minute, you know, there's a magnet that guy will, you know, say dita circuit karichi nela beluku bhiturku nela beluku gote light joluchi, asila beluku ara light joluchi, indicating that the coin direction is changing, it is producing an alternating current. nela beluku gote ball joluchi mark karo, आर पटकू गला बेलू आरटा जलुची, पुणी नॉर्थ पोल टा साउथ पोल कला बेले उल्टी जाउची, कला गुटे आ गुटे लोहा संगे लगे कि आउटे भलो भीतर को पुरेला जोर जोर करिवो, तो एमती कला बेलू आग ब्लू तापर ग्रीन, तो वोल्टेज कला बेलू आग ग्रीन तापर ब्लू, सो करंट डायरेक्शन चेंज हो जाउची, इट इज प्रोड्यूसिंग अल्टरनेटिंग करंट. जेते माने जेते अधिका रेट रे से पुरोउची सेते अधिका करंट बाहरुची, इंड्यूस्ड ईएमएफ अधिका होउची, स्लो कले अल्प बाहरुची. सो इट डिपेंड्स ऑन द रेट एट व्हिच यू आर चेंजिंग द फ्लक्स नॉट फ्लक्स डेंसिटी डी फाई बाय डीटी. से पुणी आ गुटे करिवो बुलेइबो मैग्नेटिक फील्ड को एमती रोटेट करिवो, हबो जहा करिवो तमे हबो. Okay, that finishes our program of video watching. Then एटा गोटे वीडियो भीतर को पुरीला, डायरेक्शन टा राइट को गला, दिन बाहर को गला, डायरेक्शन टा लेफ्ट को गला, पुणी साउथ पोल को चेंज कर दे उल्टा टा हबो, आगो लेफ्ट को जीवो देन साउथ को जीवो. So it will produce an alternating current. Lenz कर नियम is based on the conservation of energy. हम जदि अपोज न करू थांदा, the energy that is dissipated will be lost out. तेणु एटा अपोज करिया फल रे
energy is conserved. It's not created, not destroyed, it is conserved. And every action has an opposite reaction, so that these two laws, they govern Lenz's law. And tome koi paribo gote copper cylindrical tube re you will just drop a magnet which is just fitting. Magnetic gote spherical magnet tome khasaibo. Had it been a luha, then it will not be affected by the copper tube. Bhatkini padijibo due to acceleration, due to gravity. 9.8 meter per second square re se acceleration kari padijibo. Kintu gote magnet ku chadile se kon pai slow re padibo. Mu dekhuni to save time, so that more time will be available for discussion with Dr. Mishra. And mu kitoda problem karichi, Dr. Mishra taku dekhibe whether it is correct or not. More gote jagare doubt achi taku clear kariba. And eta kon pai ke koi paribo, raise your hand, kon pai slow padibo. Mu dekheithile dekhitanta gote luha pakeichi ghat kin padigala, kintu gote magnet pakeichi dhire 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 ghanta dekhibo di minti ghante lagibo ta bhitere padibaku. Ke koi paribo kon kahi ki ete slow hochi? Raise your hands. And are you able to hear me? Pritam kuo. सर कोन काहे कि ना हम कॉइल रो मैग्नेटिक फील्ड हमरो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करूची. ईएमआई सृष्टि होता जो एठी हमरो से तळक शीघ्र जाई पारु नै. इंड्यूस फील्ड कोड सृष्टि होची. इंड्यूस फील्ड से कॉइल सृष्टि होची. कॉइल काहे माने जो कॉपर जो yes कॉपर ताको मने मने भाबो गोटे कॉइल. से कॉपर इज ए मेटालिक कंडक्टर. तारे धीरे गोटे इंड्यूस्ड ईएमएफ सृष्टि होची. मैग्नेट ता मोशन करूची ता भितरे इट इज प्रोड्यूसिंग ए चेंज इन द फ्लक्स. चेंज इन द फ्लक्स हला माने विथ टाइम देन यू विल गेट ए करंट. सो दैट इंड्यूस्ड करंट जो सृष्टि हला दैट विल अपोज द मोशन, मैकेनिकल मोशन को भी. तमे जोटी न बुझी पारिबो डेल्टा बी कांसेप्ट जोटी फेल मारिबो तमे पोल नॉर्थ साउथ नॉर्थ ए मेकानिकल मोशन को से अपोज करिवो. से तळकु जाउची से चाहबो ऊपर को उठेबा को ताकू, किंतु कोन से पारिबो ग्रेविटी को पारिबो. तार जीभरे हाड़ अछि ग्रेविटी को पारिबो. सो ग्रेविटी अल्टीमेटली विन करिवो. सो टू सम एक्सटेंट इट विल डिले. यस करेक्ट, थैंक यू. नाउ आसीगला असल यूटिलिटी आसीगला. जो आमे पढिले लेंजेस लॉ तार यूटिलिटी आमे फैराडेज लॉ रे पाइबा. कोन ना द इंड्यूस्ड ईएमएफ is equal to the number of turns keteta ghera achi and the rate of change of flux with time. If it is better that you take the differential coefficient of the flux with respect to time, d phi by dt. So sabuda ame kintu tu problem kariba joda ko सब देइथिबो phi differentiate करिवा को पड़िबोनी, किंतु गोटे differentiation ame करिवा for some other reason. So where n E is the induced EMF, n is the number of turns in the coil, d phi by dt, delta phi by delta t, rate of change of magnetic flux with time. Negative sign is just a ornamental. It's just an ornamental. जो वोल्टेज बाहरिबो अंक कलाळु को करंट आ रेजिस्टेंस एडा को सब रिलेट कलाळु का माइनस साइन यूज ओवर इज एन ऑर्नामेंटल दैट द इंड्यूस्ड फील्ड ऑलवेज अपोजेस द बी फील्ड. द बी फील्ड को सब बळे ई फील्ड ए जो ई टा जनरेट करछि कोठी ना कॉइल रे. सो दैट विल अपोज द बी फील्ड. सेथि पय गोटे माइनस साइन दिया जाय छी, बट इट हैज नो, इट्स just an ornamental to understand the concept, otherwise it will not be used in solving problems. We shall see. Now it would a बहुत important jinso jota we might miss. I was looking to the solution. Please carefully listen, Dr. Mishra. I have a problem, I mean an apprehension here, that when we say that a coil, a plane surface is making an angle theta or say 60 degree with respect to the field. What do we mean actually?
To me, it means the surface of the coil. You can take, because it is a plane surface, you can draw a line anywhere, a straight line. And this is the field direction. And you just draw a line in the incline, supposing the surface is inclined to the field. And the, this angle, the 60 degree hobo, is it the theta that we are talking of here? Raise your hands from the student side. That the theta that it is talking of, that is the dot product or the scalar product between flux density and area vector. And if the number of turns now n asigala, number of terms is n, then total flux associated with that particular coil will be n into B dot A or BA cos theta. But what is that theta? Normally, when we say the surface is making some degree, say 60 degree with respect to the field, this we take as theta. But actually, theta, a theta ta kaun? Is it the direction between the area vector, the direction of area vector and the B vector? Or it is just the inclination of that plane surface with respect to this? Tell me, Pritam, yes. Sir, mate laguchi area vector और B vector madhyare. Precisely. Sethipai mu lekhichi angle between the field and the perpendicular to the area plane, because the area vector has a direction, as I have already told you before, we have discussed that the area, the magnitude of that vector is this area itself, maybe pi r square, maybe rectangular if it is length into breadth, whatever, but the direction of the area vector is perpendicular to the surface. So that means if this is 60 degree, then if you draw a perpendicular to this area like this, then this will be 30 degree. So you have to take 30 degree. And in many texts I find, they are telling the angle between the surface and this is 60 degree. So they are taking cos 60. They are taking cos 60. But they should say the angle between the magnetic field and perpendicular to the area is 60 degree. Then only we can take 60. Otherwise, we will take 30. Please correct me if I am wrong. Then let us proceed. As quick as possible, we will finish. This is very important. N, BA, N asigala gote BA cos theta. Theta is the angle between the magnetic field and the perpendicular. That means the direction of the area vector. So, Fleming's right hand rule, the asala right hand rule ta iti use ho. Ame jabardastia thapad rule kariki seti use kartulu. We can't use it in public. That is a secret between the students and the physics teachers. So nowhere you will find in a text. Of course, it is there. In some text it is there. I don't know whether in a Western text it might be there. So it is highly confusing. Somebody is writing Fleming rule and using right hand for the force without saying that you are using a different way. You are using the thumb in the direction of current. But the left hand rule, it is the middle finger. आर्मेचर टाको बुलेवा पानी पकेइकरी कि बांफ तयारी करिकि ताको बुलेवा जहा करबा किंतु सेठी गोटे मनुकु मन इंड्यूस्ड फील्ड क्रिएट हबो इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्टेज क्रिएट हबो फल रे इंड्यूस्ड करंट आसीबो हम घर को आसीबो कोन ना अल्टरनेटिंग करंट आसीबो द नॉर्म इज एसी किंतु आमे बुझिबा पई मु आगो डीसी कहबी बट द नॉर्म इज ए सिंपल जनरेटर जो साइकिल रे डायनामो लागुची एटा सब एसी ना फ्लक्चुएशन होउची हमर सेठी जो आसुची सेआडू 50 हर्ट्ज रे आसुची बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रे आसुची तनो हमर ठीक ये हबनी कोनोसी फ्लिकरिंग हबार नाही सो एटा कोन एटा हाथ सब रेडी करो एटा एक्जेक्टली सही जिंस बुढ़ा अंगुठी करंट द मिडल फिंगर आई
is current सब बेले सेठी भी एठी भी आउ F टा फील्ड टा होची 4 फिंगर एटा एंड एटा उल्टी गला सेठी फोर्स पड़थला मेकानिकल मोशन जो पड़थला फोर्स एठी हबो कोन ना मोशन आमे जो दोचे मोशन एटा होची इनपुट हमर आउटपुट टा होची एठी सेठी इनपुट एटा आउटपुट एटा एठी इनपुट एटा आउटपुट एटा फील्ड डायरेक्शन रिमेनिंग सेम सो तुमे धर ए कंडक्टर टा को ऊपर को उठेइबो तमे निजे कर ए कंडक्टर टा को तो निजे ऊपर को उठाउछो बिकॉज़ द आउटपुट इज मोशन सो थंब टा ऊपर गला and field empty gala and your middle finger is directing towards me so towards us asuchi current direction ta so eta ei jo prakar ro ame emf pauche aku कहंती motional emf motional जोड़ा पचार थिला प्रीतम गोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पचार थिला what is the difference between simply induced emf and motional induced emf when a simple conductor maybe alone or maybe a part of a circuit, a closed loop, is moved inside a fixed magnetic field. Then a PD and a current, induced PD and a current is generated. That is called motional EMF, motional induced EMF. And even the conductor may not be a part of the loop. सेम थी मध्य इंड्यूस करंट हबो एवं सेटा ता धरे करंट हबो as long as you know but ताकू लूप कर दले you can find and you can also harness it by using a load you can see some LED ball will glow and so on. Now this is very simple to say that you are using right hand Fleming's right hand rule तमे ए कंडक्टर ताकू मूव करूछो. This is also a case of motional EMF. Conductor is being moved and that is a part of the electrical circuit. There is no battery, nothing. Rather, it will create current. So now when you are moving this conductor upwards, so the thumb is pointing upwards and the magnetic field is from north to south always. So the direction of the... Are you using your 3 fingers? Raise your hands. Please raise your hands, students only. Not those teachers, might be some other teachers might be watching remotely. Anil sir, achanti ke apano? Anil sir sabale thanti. Are you here? In live streaming. So arthraka sakala bela 15-20 jana dekhuthile kintu bartaman 200 pakapakhi viewers hei galeni. So this discussion will remain for all times to come. Because this will be a hardcore discussion and whatever conceptual mistake that this non-expert will make will be ratified by a physics expert. So I'm so happy about it. And hela tenu yadu ko asibo semti current ra direction ta badali jibo jodi tame jodi tolu ko movement karibo emti jodi movement karibo thumb ta yade jibo and eita achi ताले करंट ता याड तम आड़ को जीवो सो इठी galvanometer deflection ता उल्टी गला so this is very simple so this is also a motional induced EMF this is a part of the circuit gote rail धारणा ऊपर एटा को गंगोडा हबो that also this is cross माने into field is into तम अंगूठी देखा भीतर को and field रो direction ता नहीं हां into and motion direction ta emiti oh my god emiti motion direction ta kuade na emiti 90 degree वाला दरकार माता कोन हे गला so that field direction ta into and a motion ta iade so that एठिया थापड़ फापड़ किसी कॉलेज फिजिक्स वाला हमें ओडा एमती करिया पडुची छी छी अच्छा एटा भितर को and the motion mechanical motion iade so that current will be upwards so that the current direction hoche emiti
आउ जदि ताकू भीतर पट बाम पट को नब ताले डाउनवर्ड्स हम. दैट इज वेरी सिंपल. नाउ एटा गोटे प्रॉब्लम पचारि थिले मु जोटा की डिस्कशन करबा को चाहूची जे ए क्वेश्चन सो देइचे coil having 100 turns is placed in a magnetic field of 3 Tesla 3T. The plane of the coil makes an angle of 60 degree. The plane of the coil makes an angle of 60 degree with the field direction. If the area of the coil is 0.5 meter square, then determine the magnetic flux linked with this coil. So we know the angle jodi theta thibo NV BA cos theta, number of turns n गुणा हिजिबो. किंतु मु देखुतली अधिकांश बही रे प्रॉब्लम 60 नेगरी करिसंती करिकरी एटा 75 वेबर आछि. किंतु जेहेतु एठी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कहिनी प्लेन ऑफ द कॉइल मु ताको एठी परपेंडिकुलर माने वेक्टर रो डायरेक्शन जोटा एरिया वेक्टर रो डायरेक्शन होच एटा that makes 30 degree with respect to the field. So I took 30 root 3 by 2 and I got the answer. This I can take half for cos 60. If my esteemed colleague Dr. Mishra says I am wrong, then I will have no hesitation to rectify myself. ये आ गोटे सुंदर क्वेश्चन पचारछंती ए डिस्कशन करिवा पूर्वरु एटा हमें परे करबा. एटा होची अति सिंपल अंकटे आउ d del phi by del t हमर जदि लेंजेस लॉ यूज करिवा del phi by del t केते, so that to find induced EMF the number of turns गोटी so phi change कला -5 milliweber weber to 3 milliweber माने फाइनल माइनस इनिशियल 3 माइनस -5 हला 8 फाइनल रो इनिशियल को फेडा जाए. सो 8 एवं तार टाइम इंटरवल हला 0.03. सो 8 हला वेबर पर सेकंड, एटा हला रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. हमें जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस दिस because there is only one turn. से टर्न कथा किछि कहि नि जदि 100 टा टर्न थांता 100 गुणी थांते. सो 0.8 by 3 volt एतिकी खाली. And once we know, we take the magnitude, I mean not the sign. If the volt is this and the resistance of the coil is 80, then we can find the current is coming 3.33 into 10 to the minus 3 ampere. So 3.33 ampere. Now it's also an interesting problem. से पुणी कहिछि जे 0.5 टेस्ला रु 0.25 टेस्ला नहीं 0 to 0.5 टेस्ला परिवर्तन हला. The flux density B yes B सो एठी तो खाली हमें बाहर करथिले केते वेबर, किंतु एठी यूज कले d5 by dt एठी वेबर रे देइची बिली हमको किसी प्रॉब्लम हला नहीं, किंतु एठी टेस्ला रे देइची परिवर्तनटा. तेनु परपेंडिकुलर अछि माने the direction of the area vector is parallel. I mean the phi as the theta is equal to 0, cos 0 is equal to 1. तेनु आराम रे हमें यूज करि परिबा ba. So B delta B area to constant achi. So change in flux is equal to change in flux density into area, because it is perpendicular. The area surface is perpendicular to the field, so that the theta will be equal to 0. So that you get this one, and I got the voltage, I mean the induced EMF, this one. Only one turn, and its radius is given. So the 2 pi r circumference is this many meter. And so से देइची जे पर मीटर तार रेजिस्टेंस एतिकी coil रो, ताले एतिकी मीटर पई total resistance of the coil will be this one. And what is the energy dissipated? So work done is the energy. So v square by r into t. So पकई देली जो भरला
0.1414 वोल्ट बाहरला स्क्वायर बाय आर टा जो बाहरची into t times टाइम टा नॉट पड़िबो नॉन एनर्जी केन बाहरियो एटा पावर हिच की सो t इज 0.25 सो 1.6 जूल पाखा पाखी एनर्जी खर्च हबो तुमे जदी एई काम करिवो सो दिस इज वेरी सिंपल वन एटा तुमे निजे कहि परियो वर्तमान पर्टिकुलरली she was interested in this part हाँ ये जो मोशनल एटा मु आगो कहि दिए बिकॉज दैट विल इंटरेस्ट यू मोर ये जो मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ अछि धरा ताको गोटे पार्ट ऑफ द गोटे सर्किट करिवो गोटे रेक्टेंगुलर करिवो ताको मूव करिवो बांको की डाण को एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर and say the length is x and the breadth is x and the length of the conductor जोटा को पार्ट करियो as a part of this loop सेटा होज l so since it is they're perpendicular to each other so cos 0 ta 1 हे गला so it is ba and area is equal to length into breadth x into l so आमे जदि ताकू इंटीग्रेट करिवा so induced EMF is equal to minus d phi by dt so ए l टा तो कांस्टेंट अछि किंतु x टा वेरिएबल अछि x टा को नौचो किबा पछकु नौचो माने x टा वेरी करूछि तो से वेरिएबल संगरे इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करिया आई एम सॉरी डिफरेंशिएट करिवा dx by dt so dx by dt is nothing but equal to displacement by time is nothing but equal to velocity instantaneous velocity so vartaman for motional induced EMF pai au gote equation he gala blv l is the length of the conductor which is a part of the circuit eta no dele bi hobo helle tame dekhi paribo eta no hole nahi kintu current develop hobo potential different develop hobo so b is the applied flux l is the length and v is the velocity with which this conductor is moving right but the condition here we have not used cos theta so that the condition here this is perpendicular to the direction of the magnetic field inclined hele we have to use again there is a complicating theta factor cos theta co theta so jinsa asijibo but for this to work you have to take this one so that the area remains perpendicular to the field so that the vector area vector has a zero angle with respect to the field vector so I have got this value e bhari gala blv अनुसार से अंकटा देछि ए अंकटा जे ए कंडक्टर टाकू निया गला 3 मीटर पर सेकंड बेगरे निया गला एवं टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड देछि से मैग्नेटिक फील्ड देछि 0.5 टेस्ला देछि एंड ए लेंथ देछि 0.5 मीटर एंड वेलोसिटी देछि 3 सो भारी वाला ए जो आकु कहंती मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ भारी वाला 1.125 तापर आई भारी वाला को इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल बट एटी डॉक्टर मिश्र कहिबे ए जो सी रे नहीं बी रे नहीं हां बी रे व्हिच एंड ऑफ द into motion टा याड जाउची so that ओहो सॉरी मु इटी भूल करछि तेनु मो निज भूलटा निजे मु रेक्टिफाई कर देली so am I correct प्रीतम एटा ठीक अछि कि देखो टिके बाहर करो एटा एमिति एंड एटा एमिति थंब सॉरी फोर फिंगर टा इनटू एंड ना भूल अछि एटा इनटू एंड मोशन टा याडे ना 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 ऊपर को आसु तो मु जहा करथली सेटा ठीक अछि एमती
एमिति एटा होची मोशन एमिति सो दैट एमिति 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 ऊपर को जीवो ना नहीं मु ठीक कर नथिला ना अरे केही मते किसी कहू न सर हेलो अरे मु आगुरु ठीक कर नथिली हाँ दिस वन इज करेक्ट ओके जदी एई डायरेक्शन रे करंट गला सपोजिंग एटा पी देइची एटा क्यू देइची मु ठीक करथिली देइची ताहले से पचरची व्हिच इज एट ए हायर पोटेंशियल डेफिनेटली जोठू करंट जाउची एटा हबो हायर पोटेंशियल क्यूटा एंड पी हबो लोअर पोटेंशियल राइट सो दैट इज द आई थिंक इज द करेक्ट आंसर गिवन क्यू is at a higher potential p as the lower potential आउ सब अंक ठीक अछि नाउ इन आई खाली गोटे जिंस रहिला ए जिंस इज वेरी सिंपल करंट रो जदी डायरेक्शन टाकू तमे करंट रो जदी मैग्नीट्यूड टाकू तमे चेंज करि करि चालिलो रेजिस्टेंस को चेंज करले रेजिस्टेंस जदी इंक्रीज करिवो ताले करंट कमिवो कंटीन्यूअसली जदी रियोस्टेट यूज करि करि रेजिस्टेंस टाकू इंक्रीज करिवो करंट कमिवो करंट किंतु गोटे डायरेक्शन रे जाउची किंतु करंट कमुची सो व्हाट विल हैपन एटा तो कहि परियो गुडा सब तुम कहि सारची एटा जदि न कहि परियो देन आजिकार कार्यक्रम रे जॉइन करि कि लाभ हलानी एगुडा सब कहि परियो एवं से सेटा पचारनी से ई एंड एफ पचारची जदि करंट रो डायरेक्शन एमिति अछि हाथ कर कमुची किंतु डायरेक्शन एमिति अछि तमे फ्लक्स जो ता देरे पडुची कमुची माने डेल्टा बी रो डायरेक्शन याड है तेणु इंड्यूस करंट रो डायरेक्शन याड हबो माने कोन एमिति सो दैट नॉर्थ पोल टा एपटे क्रिएट हबो अवश्य हम पोल नाइट द परमानेंट मैग्नेट होउनी एठी करंट रो डायरेक्शन टा सेम अछि किंतु मैग्नीट्यूड कमुची तेणु करंट सृष्टि करथुवा जो मैग्नेटिक फील्ड कमिबो लिंकिंग से लिंकिंग कमिबो माने डेल्टा बी रो डायरेक्शन टा नेगेटिव माने हम ए डायरेक्शन को नेगेटिव नै छै एटा पॉजिटिव नै छै सो ए डायरेक्शन रो जदी डेल्टा बी तले ए डायरेक्शन रो हबो द इंड्यूस करंट सो एमिति आसीबो बुझेला एंड एठी रेजिस्टेंस को डिक्रीज करा दउची ता माने करंट रो किंतु करंट रो डायरेक्शन सेम अछि सो करंट रो मैग्नीट्यूड जदी बड़ी बड़ी चलिबो द फ्लक्स लिंकिंग विथ द कॉइल फिक्स्ड कॉइल विल इंक्रीज सो डेल्टा बी रो डायरेक्शन ता पॉजिटिव जदी एपटे ताहले इंड्यूस्ड करंट रो डायरेक्शन ता एपटे सो एमिति हेले सो दैट इट विल बी फ्रॉम द राइट साइड इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज बुझिला प्रीतम यस सर and also bujhila you know the motional induced EMF bujhila सर मु गुटे क्वेश्चन सर छाडी ची चार्ट सेटिंग देखंतु हां मु देखिबी सेटा देखिबी सार देखंतु काइंडली डॉक्टर मिश्रा सी इन द YouTube चार्ट ना एठी ए चार्ट भी से देखि परिबे yes are you able to see yes you will give the answer that तापरे मु अल्प समय भितरे मु इलेक्ट्रिक जनरेटर कथा कहि दउची जनरेटर इज बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल लेंजेस लॉ फैराडेज लॉ को बेस करिकरी हमें पाइबा इंड्यूस्ड ईएमएफ सो द सिंपल जनरेटर जोटा डायनामो किबा हमें जो पाउचे घरे इलेक्ट्रिसिटी इज एसी ए केस रे हमर एक्चुअली जो डायनामो पिला बेले हमें मु थरे खंडे मोर साइकिल आछि हमर तो ओम साई रो वर्तमान इलेक्ट्रिक साइकिल आसिलानी तार थेते डायनामो अछि साई नो सर रात्रि लाइट हबोनी नो सर लाइट ता नाइ सही तो कथा मु गोटे इलेक्ट्रिक साइकिल किनिबी जेते लाइट थिबो अच्छा सेते बेले हम यूज करथुल गोटे डायनामो तमे सब देखि दिबो पुराना बाइसाइकल रे तमर जेजंग अमलर डायनामो आमे तले पेडल मारिबा जते पेडल मारथवा जोरे सेते जोरे चलथुबो जते कमी जीवो बंद हे गेले बंद हे जीवो सेटा कोन गोटे मैग्नेट से बुलुची कॉइल सेट फिक्स्ड अछि जहा हो
जीए बोलू change of the magnetic flux ro change habo linking to the coil, definitely there will be production of induced current, and a case रे निश्चय ये हबो एपट बेलू एपट जीव कारण चेंज होउछि ना, तेणु इट विल प्रोड्यूस ए अल्टरनेटिंग करंट। मु कहूछि डिटेल्स ता कोन ना, देखो प्रथमे बुझिबा पई आमे गोटे डीसी जनरेटर नबा, एका जिंस थाए सेई स्प्लिट रिंग। डीसी जनरेटर खाली बुझिबा पई कहूछि, बट एक्चुअली आमे एसी जनरेटर यूज करिवा एवं एसी मोटर भी आमे यूज करूचे। डीसी मोटर छोट छोट जगह यूज होउछि, एसी मोटर भी यूज करूचे, बट एसी मोटर कथा मु कहिनी। डीसी जनरेटर बुझिबा पई आमे आगो कारण एठरे जेमति सेठी सेमति स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर यूज होतला, एठी मध्ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर यूज हो। डिफरेंस कोन, एठी इनपुट ता होछि एटा, आउटपुट होछि एटा, सेठी इनपुट एटा, आउटपुट एटा इज द ओनली डिफरेंस। आ सेठी लेफ्ट हैंड, एठी राइट हैंड, आमे ताको सिंपलीफाई करिया पे कर दैछे। अच्छा वर्तमान देखो मु गोटे जानि करी एमति देखैछि, व्हेन द कॉइल इज parallel to the surface of the coil is parallel to the field, at that time definitely the flux linking will be zero, no doubt, but interestingly the current is maximum. Why it is maximum, I'll tell you mathematically. Although I concede the physical interpretation if I make, then it will be creating more confusion than proper understanding. So I will concede here that a mathematical understanding is enough to understand why when the coil is parallel to the magnetic field, or the area vector direction is perpendicular to the field, phase cos 90 is 0, that means no flux is linking. At that time the induced EMF and induced current is maximum. And when it is perpendicular, when maximum flux is linking, because the area vector has direction parallel to the magnetic field, at that time but the current is 0, induced EMF is 0. That I will explain you mathematically. Now what happens, एटा गोटे पार्ट देखैछि बुझेबा पई, to apply the right hand rule ता देखैछि, किंतु आरंभ करबा एमिति 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 मु एंटी क्लॉकवाइज लोक एमिति द क्लॉकवाइज नेले भी हबो, एमिति 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 एमिति। सो एठू धरो ए बी सी डी, वर्तमान आसुची करंट आ भितरे बी ए डी सी एमती ए पर्यंत जो पर्यंत कम्यूटेटर चेंज न होइछि, एठू ए पर्यंत बी ए सी डी, राइट। नाउ एज यूजुअल ए R1 टा ए स्प्लिट रिंग S1 भी कहितले थांता, कम्यूटेटर टा लागिछि फिक्स्ड ब्रश B1 संगरे, ए फिक्स्ड ब्रश B2 संगरे R2 लागिछि, आ गुटे स्प्लिट रिंग लागिछि। तो वर्तमान आको अप्लाई करो, देखिबो मोशन टा तमे एंटी क्लॉकवाइज दउछ, मु दउछि, तुम्हें क्लॉकवाइज दे पारो। सो सही अनुसार रूल अप्लाई करो, मो हाथ कटिलानी। सो फील्ड डायरेक्शन एमिति, फील्ड डायरेक्शन एमिति, फील्ड डायरेक्शन एमिति, एंड बी डायरेक्शन एमिति, आ मोशन एमिति, सो दैट याड को आसियो, मो आड ए तळु को आसियो करंट। सो हेकरी एपट भी अप्लाई कले ऊपर को जीवो। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप। तो जति हला तले एटा को जति हमें नै जीवा लागिछि, तो एटा लागिछि वर्तमान ए हाफ रोटेशन भितरे, एटा लागिछि कोठी ना ए संगरे, एटा ब्रश B1 संगरे। सो करंट डायरेक्शन एया रहिला, एमटी जाइकरी 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 एपट आसला कोठु एम टू एम जाके, एटू पुडी कम्यूटेटर चेंज हे गला। ए देखो एटू कम्यूटेटर चेंज हे गला कोन, the moment commutator changes rotation किंतु आमे continuously से एंटी क्लॉकवाइज रे करूचे। वर्तमान एथला कोन हेथला BADC, वर्तमान कम्यूटेटर चेंज हे गला, ब्रश स्वैप करि गला बिटवीन कम्यूटेटर्स, सो दैट वर्तमान CDAB वर्तमान चलथला BADC, वर्तमान ठीक उल्टाटा एट देखो भितरे CDAB, वर्तमान करंट एमती आसी। वर्तमान एटा कोठी ना एटा वर्तमान भितरे डायरेक्शन
चेंज हो गलानी किंतु बाहर से रही कारण ये आसीगलानी ये डायरेक्शन टा एमती आसी एमती आसी करंट टा पुणी से R2 बाट देकी B1 बाट देकी जाउची ना सो भितरे करंट डायरेक्शन टा चेंज हेकरी बाहर करंट डायरेक्शन टा सेम रहउची प्रोड्यूसिंग डीसी करंट बट इफ यू ड्रॉ हाउ इट इज इंक्रीजिंग हाउ इट इज डिक्रीजिंग थीटा को नेकरी इफ यू टेक थीटा इनटू अकाउंट फ्लक्स लिंकिंग particularly you know d phi by dt एठी आउ phi काम दोनी d phi by dt into account you will find a point रे जो थेले मु कहितली परपेंडिकुलर अछि ए पॉइंट रे is maximum sorry is minimum no current zero जते 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 पाखे पाखे आसुचे we are going more and more to the parallel condition you know that you know the theta is changing then the rate of change of flux with respect to time that is increasing and the rate of change of increase in flux with respect to time is maximum when the you know the coil is parallel to the field and the time d phi by dt is maximum so current is maximum induced emf is maximum पुणी पुणी चला बेले पुणी करंट पॉजिटिव अछि माने तार मैग्नीट्यूड कमुची कमी कमी पुणी जतबेले परपेंडिकुलर हे जीवो फ्लक्स लिंकिंग विल बी मैक्सिमम पर d phi by dt is 0 हे जीवो पुणी 0 आसी गला पुणी एमती so ita gote half rotation ita out half rotation so you will be encountering with two maximum point and you know starting from jot start करथले say to finish कले 0 degree जा 360 से या so this is 90 this is 180 degree पुणी current 0 हला perpendicular आसी गला पुणी 270 रे highest then 360 रे पुणी back to pavilion चारटा देइछि current direction bottom line हला भितरे current direction change हेगिरि भी in two half rotations बाहरे current direction same रहिछि किंतु हलुची माने राइट को जाउची पुणी आसुची पुणी जाउची आसुची गोटे 360 रे थरे जीवो पुणी आसीबो पुणी आउतरे जीवो आउतरे आसीबो सो दिस इज द थिंग राइट को जीवो मैक्सिमम हला एटा मैक्सिमम पोजीशन यू नो जेतले पैरेलल अछि पुणी 0 हला नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर पुणी आरपट डायरेक्शन को जाउनी सेही पट डायरेक्शन को मैक्सिमम को जाउची एंड पुणी आसेला 0 को किंतु so एठी होची इंपोर्टेंट कांसेप्ट होची कोन मु एठी कोठी गोटे करिची ना एठी करिची somewhere I have done मु कोठी करिची maybe in another file हाँ एठी करछि कोठी गोटे मु भूली जाइछि देखो phi is equal to b dot a ba cos theta theta is the angle जो एंगल कथाटा हमर पड़िथिला तुम जानि छ एवं ताकू जदि हम एठी एंगुलर वेलोसिटी कर दबा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा बाय टी गोटे टाइम टा को आनिया पड़ियो ना एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट टाइम इज फ्लक्चुएटिंग सो थीटा जगह रे हमें ओमेगा टी लिखले इज एंगुलर वेलोसिटी थीटा बाय टी टा होच ओमेगा टी सो वर्तमान एरिया वेक्टर एटा ता डायरेक्शन टा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर दिस एटा हला फील्ड वेक्टर and the angle here is theta a angle be theta so d phi by dt तम से डिफरेंशिएट करबा को with respect to t तमे 11th क्लास रे जानिबो बा किछि पिला जानि चललणी जे एटा उडा कांस्टेंट w टा बाहरी आसीबो एवं cos थीटा रो तार डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ माइनस sin थीटा किंतु ए कांस्टेंट टा बाहरी आसीबो जानिबो सिकिबो सो b टा कांस्टेंट बाहरी आसिला एवं वेरिएबल जिनसटा रहिला wt भी रहिला एवं गोटे w बाहरला ता रिजल्ट हला एटा sin को पळे आसिला सो d phi by dt phi सिना मैक्सिमम व्हेन इट इज परपेंडिकुलर बट d phi by dt sin थीटा टा 0 एटा हला sin थीटा दिस इज एक्चुअली wt इज अगेन थीटा मुझे देटी लिखि देबी so if I write here I'm sorry what गला
एटा आसी गला एटा पर थिला कुआडे गला कोटी लुचिक अच्छी जो मुझे doesn't matter हाथ तो लेखा थिला कोटे पळे लागी कंट्रोल जेड कर दो हाँ एठी मु कर दू आउ थरे कोई बात नहीं सो एठी हमर आसी गला यस सो d5 by dt is equal to minus ba ओमेगा sin थीटा एटा मु लिखियो को जाउतली जे कोन भई गला जे मु एठी नर्वस हे गली is equal to minus ba ओमेगा sin थीटा सो जते बेले परपेंडिकुलर अच्छी सेते बेले थीटाटा 0 परपेंडिकुलर अच्छी माने एरिया वेक्टर इज पैरेलल तो थीटाटा 0 हेले sin 0 0 सो d5 by dt 0 हेले e 0 emf 0 i 0 किंतु पैरेलल अच्छी किंतु सेते बेले तार डायरेक्शन टा परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर डायरेक्शन टा परपेंडिकुलर and therefore sin 90 will be maximum when the coil is parallel. It has parallel chinna parallel to the field, so theta is 90 degrees, so d5 dt is maximum ba sin 90 is equal to 1. So that is why mathematically we can express when the flux is maximum the d5 by dt is 0, and when flux is 0 d5 dt is maximum. So ame korthile koटा ए सरी गला एटा हाँ तो आमे एटा ऑलरेडी कर सारलेनी एटा आमे कर सारलेनी हाँ एई गुडा को एटी मु करथिली एटी करथिली 90 ओके एसी जनरेटर रे हमको खाली गोटे चेंज करिया पड़िबो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर जगह रे स्लिप रिंग पूरा लगेया पड़िबो यू नो एटा रिंग धीरे बुलुची नोने एंटायर बाहर परिपथ बुली थांता तेणु ए रिंग भितरे बुलुची ए रिंग टा B1 संगे लागिची ए रिंग टा R2 टा B2 संगे लागिची सो दैट भितरे भी चेंज होची बाहर भी चेंज होची कारण एपट को आसला बेलकू BADC एथरे CDBA किंतु CD टा सेही लागिची आ संगे जो रिंग संगे लगी से सेठी अच्छी रिंग टा गुरु 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 होची सो दैट हमको बाह्य परिपथ गुरु गुरु होबा को पडुनी राइट सो वर्तमान रिंग टा जो बी रे लागला एठी रिंग टू बी एठी भी रिंग टू बी किंतु वर्तमान जेहेतु CDBA को आसुची तेणु करंट रो डायरेक्शन टा एमती जीवो एई गोटे हाफ रे आमे जदी राइट हैंड रूल यूज करिबा स्लिप रिंग यूज करि इज वेरी सिंपल जदी एटा आसिला एठी एमिति गला ताहले आरो हाफ रे CDBA गलाळकू सेटा CD टा लागिची B2 को R2 जरिया रे सो एमिति एटा एठी हेथला एमिति एमिति हेगिरी ए पट बाट देगिरी एटा AB संगे लागिची R1 B1 सो ए बाट देगी चलला गाड़ी सो दिस इज AC जनरेटर यार मध्य तार जम देइथिले दिस इज एक्चुअली द नॉर्म आमे जो घरे घरे यूज करछे एटा सो एमती में आरंभ करिवा इज द मैक्सिमम जीरो करंट मैक्सिमम करंट तापर पुनी करंट रो मैग्नीट्यूड कमिला जीरो हैला पुनी नेगेटिव डायरेक्शन रे हैला करंट रो डायरेक्शन चेंज हैला वर्तमान एठी पुनी नेगेटिव मैक्सिमम एठी पुनी एठी गले जीरो तो एमती गोटे साइकिल दैट इज व्हाट इज कॉल्ड नंबर ऑफ साइकिल्स ए भलिया फुल साइकिल गोटे सेकंड रे जेतिकिटा जीवो ए भलिया साइकिल दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर AC that is frequency is in hertz second inverse. So this is very simple, and you can have a watch in a 1 minute video. By that time I
because you are rotating in a particular direction. And there is a slip ring. You can have a look. There are two slip rings. A1, you know, जो R1 टा B1 लगी थी सीसेटी अच्छी, R2 टा B2 लगी थी सेमती अच्छी, किंतु बुलुची से, बुल्ला बुल को करंट डायरेक्शन चेंज होची, बाहर भी चेंज होची. आरो बुलिमो, वर्तमान हमें जीवा, जितने शीघ्र हमें जीवा, जितने शीघ्र भलो. Alternator generator हला कौन? ना magnetic field rotate करिवो, armature टा fixed रहिवो. Already कहि सालेनी, काहको कहंती आवृत्ति बा frequency of the AC voltage को कहि सालेनी, number of full cycles per second कहि सालेनी. एटा motional EMF कथा मु कहि सालेनी. Transformer तुमे जानि छ केमती step up step down अभी से डिस्कशन करवानी. एंड एटा हला actual AC जोटा आमे पाउचे, किंतु तमे चाहू छ जदी नेगेटिव करंट टाको विदा करिवो ताहले गोटे हाफ वेव रेक्टिफायर लगै देले व्हिच इज अ डायोड से मझरे मझरे बंद हे जिवो, सो दैट आमे जे देखु छ बागर जक 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 होची त से गुडा गोटे सेकंड पई बंद, गोटे फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट पई बंद हे जोची पुनी खोलुची. तो एटा हाफ वेव रेक्टिफायर डेकोरेशन लाइट पई यूज वे. आ जदी पूरा चेंज करियो को चाहू छ नेगेटिव टाको पॉजिटिव दैट फुल वेव रेक्टिफायर लगेले, सो नेगेटिव करंट टाको से पॉजिटिव कर दो. एवं ताको आउरी स्मूथ करिवे कोले कैपेसिटर लगेया पड़िबो. से जो तळ ऊपर होची स्मूथिंग करिवे कोले कैपेसिटर लगेया पड़िबो. सो यूज ऑफ कैपेसिटर स्मूथ्स, किंतु इट्स नॉट लाइक बैटरी भलिया स्टेडी करंट दबनी. बैटरी केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो एटा केवल बैटरी देई परिबो, यू नो. सो दैट फिनिशेस आवर प्रोग्राम. तुम्हारो आउ जहार जहार डाउट रहिला बर्तन आई रिक्वेस्ट डॉक्टर मिश्रा टू अपीयर. अच्छा प्रीतम तमर जो क्वेश्चन सब थिला मु मते देइथिला, हैव आई डिस्कस देम? Okay sir, what is it sir? हाँ, what more extra doubt that you have given and other things about my mistake and all that he will tell you. Yes. Dr. Mishra, please. Not able to hear you. Tomorrow microphone टाको on करो. Sorry sir, Dr. Mishra, please open your microphone. It looks closed. Yes. Okay. First, let us take the questions of the participants. Yes. What are the different questions? So there is only one question, two questions. Can we generate EMI without doing motion? From Pritham. Second question, if EMI cannot be generated without motion, does every induced field EMF come under motional EMF? Okay. Pritham, actually, what you have studied till now, that is, suppose there is a motion of a magnet or a coil. But a magnet coil पाखरे move करिवो, किबा गोटे coil magnetic field रे move करिवो, ताले flux ता change होची, flux linked with the coil change होची. Flux linked माने कोन? Flux linked flux माने कोन? ना flux to magnetic lines of force, field lines गुडा थोड़ा ची closed path. सेमती जीव ता भीतर coil रे पसिकी पुनी बाहरी आसी. Coil भीतर जीव पुनी पसिकी ता भीतर बाहरी आसो. एटा माने पूरा coil ताले मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम जीवता भीतर पुणी ए भीतर पसिकी बाहरी आसो. ताने कॉइल फ्लक्स का लिंकेज हला पूरा. इज इट विजिबल? तो फ्लक्स ता एमती जाईकरी एमती लिंक हे आसो. एमती खाली जीवनी एमती पळेबनी, पळेबो पुणी फेरी के आसो. ताले इट इज अ क्लोज्ड पाथ. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज ओपन, किंतु मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दे आर क्लोज्ड. इज द लिंक, दैट वाज द लिंकेज. सो व्हेन द कॉइल इज मूविंग like this or like this perpendicularly, or the magnet is moving, then flux will change, then induced EMF will be produced, current will be produced. That we have discussed till now. But what is your answer, that without motion EMI is possible or not? Yes, it is possible. How it can be possible? Now, suppose you are taking a coil, suppose solenoid.
ताले सोलेनॉइड रे तमरो करंट आई बळे पास करके जाउछु ना सपोज से करंट जो हमें पास करछे सोलेनॉइड थ्रू देकी से करंट को इटसेल्फ चेंज करला हां सेटा हमें डिस्कस करथिले बरा गोटे प्रॉब्लम रे प्रीतम पचारथिला यस यस सो करंट को तमे जे ता भीतर चेंज करछो ताले जेतोले गोटे इंस्टेंट ऑफ टाइम रे करंट जाउची आ भीतर किछि मैग्नेटिक फ्लक्स अछि पर्टिकुलर गोटे पर्टिकुलर करंट पई किछि मैग्नेटिक फ्लक्स अछि करंट यदि 1 एम्पियर 2 एम्पियर हला से चेंज करिया भितरे आ भितरे मैग्नेटिक फ्लक्स ता मध्ये चेंज हला ए भितरे फ्लक्स ता मध्ये चेंज हला ताले एई को सेम कॉइल भितरे हमें आउ कहा द्वारा नहीं से निज को निज भितरे गोटे इंड्यूस्ड में प्रोड्यूस करबो कारण कॉइल रे करंट चेंज करबा द्वारा निज भितरे करंट चेंज करबा द्वारा निजे तारी भितरे गोटे पुडी इंड्यूस्ड में प्रोड्यूस हला तुम ता ना दबा सेल्फ इंडक्शन एठी किछि मोशन हेलानी एठी कोन से प्रकार मोशन होउनी केवल करंट को आ भितरे चेंज करछ तमे यदि करंट को चेंज डीसी सप्लाई करी बारंबार ऑफ ऑन करिवो ताली हबो एबा सबटु बढ़िया एबे जो सार कहले जे एसी अछि तम पाखरे जनरेटर द्वारा एसी प्रोड्यूस करछ से एसी ता पास करिया भितरे तो एसी करछ माने गण अल्टरनेटिव करंट रे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सब बळे चेंज होछ डायरेक्शन तो पीरियडिकली चेंज होछ मैग्नीट्यूड किंतु प्रत्येक इंस्टेंट रे चेंज होछ तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज करिया द्वारा तारे ता भितरे गोटे मैग्नेटिक फ्लक्स मध्ये चेंज हला तो इंड्यूस्ड में मध्ये चेंज हला आउ जे कॉइल टा को हमें बाहर आनी के सर्किट क्लोज कर दवा ताला बे मध्ये इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करिवो हा सबटु मजा कथा होची सेई जो करंट टा ओरिजिनल करंट को अपोज करिवो थैंक यू लेंस लो कोन कहूची लेंस लो कहूची सी प्रोड्यूस हला मात्रे के इंड्यूस्ड ईएमएफ जो थी पई प्रोड्यूस करथिवो जीए ताकू प्रोड्यूस करथिवो ताकू ही से अपोज करिवो लेंस लॉ जीए तार प्रोडक्शन करिवो से ताकू ही अपोज कर उड़ांगार पुत्र जहा द्वारा प्रोड्यूस हबो से ताकू ही पास करते न अपोज करिवो यदि भस्मासुर सुनि दिबो भस्मासुर बर पाइला शिव गोटू जा मुंड रे हाथ दबु सी भस्म होई दिबो से प्रथमे टेस्ट करियो चाइना शिव को ऊपर मुंड ऊपर हाथ दबु चाइना तो एठी मध्ये से किंतु एटा पॉजिटिव सेंस रहउची एटा ए जिंसटा का हम जो बाहर करछे इंड्यूस्ड ईएमएफ ताको ताका पॉजिटिव सेंस से यूज करछे आउ केनते ही परिबो ना सपोज तुम पाखरे गोटे कॉइल अछि आउ गोटे कॉइल तुम पाखरे अछि दुईटा कॉइल अछि ए बढ़िया दुईटा कॉइल अछि गोटे कॉइल अछि आउ गोटे कॉइल से समान साइज हो कम साइज हो किंतु आर एरिया आउ आर एरिया भीतर किछि लिंक हिबो किबा एई कॉइलटा का भीतर एई भीतर मध्ये रहि परियो पाखा पाखी रहि परियो तो एई केस रे कोन हो ना केईका को टच करना दी केईका को टच करना बर्तन कोन करबा गोटे कॉइल रे करंट चेंज करबा मोशन होनी किछि एई कॉइल रे करंट ता चेंज करबा ताले एथिरे तो जहा सेल्फ इंडक्शन हबो किंतु एई कॉइल ता ता पाखरे अछि ताले एथिरे जो मैग्नेटिक फील्ड अछि ये मध्ये लिंकेज होछि आ भीतर ये एमटी आसी एमटी लिंकेज होछि ये एमटी आसी एमटी लिंकेज होछि तर आ भीतर मध्ये मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो एथिरे किछि करंट नाही मोशन नाही किछि नाही ये खाली ता पाखरे सांग होई ता पाखरे ठिया आइछि आ किछि नाही तो जते बळे ए कॉइल रे करंट चेंज हला ए कॉइल रे मध्ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हला तो एथिरे जेतु मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हला सेथिरु इंड्यूस्ड में प्रोड्यूस हला आ सेथिरे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हला सेटा को हम यूज करनो आकु का जीवो पारस्परिक बा म्यूचुअल इंडक्शन गोटे बंधु करंट चेंज करला आउ गोटे बंधु भितरे करंट प्रोड्यूस ही गला करंट जनरेट ही गला आकु सेल्फ इंडक्शन एथिरे होची म्यूचुअल इंडक्शन ये ए कॉइलटा आकु म्यूचुअल इंडक्शन करूची एथिरे इंड्यूस्ड ईएमएफ बा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होची जोटा की सार लास्ट को देखौतिले ट्रांसफार्मर दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर प्रत्येक ट्रांसफार्मर एई प्रिंसिपल पर बेस वे म्यूचुअल इंडक्शन गोटा करे करंट चेंज करिबा आरोटा रे करंट प्रोड्यूस हां could you get the question answer of your question Pritam how kon question achi participants man ke butare om सर सेकंड आउट टाइम जो हां सर सी एवरी इंड्यूस्ड फील्ड जो सेकंड क्वेश्चन टाइम वो डाउट थी ए जो प्रीतम पचार जी
सेटा डिस्कशन हे गला Yes, sir. माने मोशन नथिले मध्य इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हे परिबो माने मोशनल ईएमएफ is induced EMF. Motional induced EMF is induced EMF, but not all induced EMF are motional EMF. सबुठ मजा कथा सर गोटे मजा कथा होची ट्रांसफार्मर को आमे साधारणतः जो मार्केट रे तुम घर पाखरे रास्ता रे सब ट्रांसफार्मर से शब्द करे चीची शब्द करता है किंतु ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड ए साइलेंट डिवाइस काहे कि ना सेतर किसी मोशन होनी साइलेंट डिवाइस को विदाउट एनी मोशन current is being magnetic field is produced, current is produced, that's why it is called silent device. Otherwise हमें जानी जे ट्रांसफार्मर बहुत शब्द करे पाखरे से शब्दटा अलगा कारण पाई जेतु बहुत गुडे कॉइल थाए नंबर ऑफ टर्न्स सेतरे थाए सो करंट सेतरे पास करता है देयर इज रेजिस्टेंस इन द कॉइल सो देयर इज ऑलवेज एट द कॉर्नर एट द टेंडेंशियली देयर इज ए कोरोना डिस्चार्ज द करंट चार्ज पार्टिकल बाहर को पड़ाए माने कॉइल रू बाहर गिरी एयर मीडियम को पड़ाए तो एयर मीडियम को तापर डॉक्टर मिश्र एडी करंट्स भी ता भीतर हुए एडी करंट तो सेपरेट थिंग ता कोर रे प्रोड्यूस तो इतने चार्ज उड़ा बाहर को जाए एयर मॉलिक्यूल गुडा को ब्रेक कर दिए ब्रेक कर ता भीतर इलेक्ट्रॉन बाहर जाए से जो बाहरी बा स्टेज रे इट प्रोड्यूसेस साउंड एंड आल्सो सम लाइट आल्सो ग्रीनिश लाइट ताको जे कोरोना डिस्चार्ज बेले बेले अंधार रे जंगल मान करे तार रु इलेक्ट्रिक खुंटी रु सब लाइट देखा जाउता है शब्द भी सुना जाए आमे ताको भूत बोली को पूरा अंधार रास्ता रे देखिबो हठात गोटे लाइट गोटे कोड बाहर एंड एक्चुअली दिस इज कोरोना डिस्चार्ज ओके नेक्स्ट How anybody who is watching remotely can write down in the chat box. So now hello let me ask one question. Suppose we have a coil like this. I'm placing this horizontally. Okay. Now this is a bar magnet. Suppose this end suppose is north, and I'm holding the south pole. I will just release this magnet to this. Just throw कर दी, एंड छाड़ दे जदि एटा मैग्नेट नय खाली लोहाटे हितांता ताले आरो एक्सेलरेशन रे माने तार वेलोसिटी रे किछ चेंज हेई थांता नय हितांता जदि एटा मैग्नेट गोटे ताले आरो वेलोसिटी रे किछ चेंज होके माने एक्सेलरेशन किछ एक्सेलरेशन तो यू नो when it is falling acceleration is small g acceleration due to gravity 9.8 meter per second square will it change एटा दि मैग्नेट हला will it change जदि चेंज हबो काहे के हबो जदि हबनी काहे के हबो am I clear the question is clear to all I repeat the question what a horizontal coil achi coil is there and it is carrying current now I am suppose a magnet is falling through this then will it produce any change in acceleration एतरे करंट न थाउ करंट छाडी खाली गोटे कॉइल दे दिता खाली कॉइल will it produce any change in acceleration एतले पडुची पास करची अपन पास करके चल जाउची प्रीतम हाथ किछि प्रीतम को यस आके सर हबो सर हमर एक्सेलरेशन रे हमर कमी जीवो कारण जेता बेले सी हमर तळ को खसुची मैग्नेट ता तार हम नॉर्थ पोल ता से जो इंड्यूस्ड हमर मैग्नेटिक फील्ड तयारी करिवो सी हम तार नॉर्थ पोल ताको अपोज करिवो तेनु सी हमर खसिला बेले ताको माने हमर होजकु तार एक्सेलरेशन कमी जीवो तेनु सी एते सिर खसि परिबो नाही जो कथाटा कहउतली कॉपर ट्यूब रे जो कथाटा कहउतली हां ठीक ठीक okay that's correct very good congratulations now what will happen well it is approaching the coil so acceleration will decrease very good the cause is also perfectly correct but when it is just passing through the coil what will happen आउथेटी कोइ मारिबे ना सर
जते बेले कॉइलटा पडुचे भी पडी चलची एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कमिला कमुची रिपल्सन रो कमियो किंतु जते बेले जस्ट क्रॉस करके जाउची एपटे पडी के ऊपर आसी की तळाडी के जाउची मझी रे तळे अछि सेही मोमेंट रे कोन हबो and what will happen when it will go through this जते पडुची ततले पडिला पडुची कॉइल आडी के आसुची एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कमुची गुड what will happen falling through it and what will happen when it is going away from it अरे बाबू के को भूल हे जाऊ सार माने खुशी होंती भूल हेले भलो डिस्कशन हो नले वेरी गुड कहि रखि दवा ब्रह्मा विष्णु को संगरे सेल मीटिंग रे थिले ब्रह्मा को Sir, will acceleration slowly increase? increase अच्छा why माने केते बेले जते बेले बाहर की पडौची So just जेतल बाहर अच्छा जस्ट बाहर छी ना सेंटर रे अछि एतो किंतु गोटे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टाइम रहइबो ना प्रोसेस इज कंटिन्यूइंग एठी डिक्रीज करि के चलला एक्सेलरेशन एठी गोटे कोन हैला तापर पुनी कोन हो ए मोमेंट रे कोन हो नहीं सेही मूवमेंट रे Sir, फिर increase करियो ना decrease हला परे अच्छा then what will happen after that Sir, जो acceleration रे माने पूर्वरु माने से गला भितरु गला पूर्वरु जेमति जाउतला जे acceleration सेमति जीवो माने g रु स्मॉल g रु कम होबो ना बेसी होबो Sir, equal हबो acceleration will not change when it is going passing through पडौचेंती Yes, sir. खाली एठी पडिला बेले एक्सेलरेशन कमिला आ बाहर की गला परे आ एक्सेलरेशन कमिबनी g ही रहइबो Yes, sir. अच्छा डू यू एग्री अन्य माने जो माने अछंती तार आंसर रे एग्री करछो की ना सर हां कोन ना सर कोन हला को बढ़िया हां से जेतल तळे पडिबो सेते बेले से जो कॉइल रो तळ पार्टटा सी हमरो ठीक एटा नॉर्थ कला एपटा साउथ होता हां ता सेटा तणो सेटा ए सेही पटटा हेबे हां हेइ जीवो नॉर्थ माने एई प्लेन ता वर्तन हे जीवो नॉर्थ पोल काहे कि ना से अपोज करिवो ताले से वर्तन देखो अट्रैक्ट करियो चेष्टा करियो अट्रैक्ट करियो सेटा तळ जी को अपोज हबो वेरी गुड हां ताले से पुनी अपोज करियो ताले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पुनी कमिबो ताले ये जतले पडुची कमुची ये तले पडिबो भी कमिबो बट मोमेंटली एई पोजीशन ने देयर विल बी अ सडन जंप बिकॉज़ सही टाइम रे मैग्नेटिक फ्लक्स ता भीतर चाउ चेंज करि पर जस्ट फिक्स्ड गोटे माने फ्रैक्शन ऑफ नानो सेकंड टाइम चेंज ही पर तो सही मोमेंट रे सी केते गोटे जंप हबो पुनी सही जीटा कमी के चाहिबो बढ़िया को कि ता ओरिजिनल वैल्यू को जी को आसीबो किंतु आसीबोनी तेनो बट सेटा जणा पड़िबोनी so but when this question is there write down the acceleration due to gravity of the magnet will go on decreasing पड़िला बेले पड़ी की बाहरला बेले जोटा कि ट्यूब एक्सपेरिमेंट रे सब देखै छै ओके एनी अदर क्वेश्चन बढ़िया जो बाहरला बेले जो कमिबो सेटा गोटे बढ़िया इंटरेस्टिंग कथाटा डॉक्टर मिश्र कहिले जोटा नाइसली एक्सप्लेन बाय प्रीतम yes आंसर्ड बाय प्रीतम all the best acha is there any other question or I will ask another question no you please ask another question okay suppose तुम screen टा जे laptop धरिछ किबा मोबाइल धरिछ place this perpendicular to a face okay the magnetic field suppose is माने cross दिया हिची ता माने into your screen magnetic field is into empty जाउछ ओके ता भीतरे गोटे रेक्टेंगुलर कॉइल एंते गोटे रेक्टेंगुलर कॉइल दे एटा हला बर्तन मैग्नेटिक फील्ड बर्तन ए रेक्टेंगुलर कॉइल टाकू एंती रखाई दैट कॉइल इज मूविंग इनसाइड दैट मैग्नेटिक फील्ड मोशन होउची सपोज तम स्क्रीन लेफ्ट रु राइट पर्यंत मैग्नेटिक फील्ड अछि पूरा होल स्क्रीन रे मो लेफ्ट रु आरंभ करली कि राइट रु आरंभ करली मु मूव करे
Okay, and they move for it. Will there be induced EMF produce haba ki? हमें डिस्कस करिचे प्रीतम समस्त हाथ टेक एमते मूव करूची एग्जैक्टली एटा हमें डिस्कस करिचे किंबा प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर कर दोछ बता एटा मैग्नेटिक फील्ड एटा नॉर्मल वेक्टर नॉर्मल एरिया वेक्टर सो एंगल 0 डिग्री ओके एमते मूव करूची इनसाइड दैट मैग्नेटिक फील्ड इट इज मूविंग it has a linear motion v velocity results. It is a rectangular coil, not solid like this. It is a rectangular coil. Induced EMF produce haba ki jadi haba induced current produce haba ki jadi induced current produce haba co direction produce मैं खाता रे करो खाता रे क्रॉस हां पूरा रफ खाता बाहर कर let me help you. Hello. sir. Let me help the students. Yes. By drawing because That's very good. Mishra That's is nice. unable to annotate. Mu tike annotation karuchi by sharing the screen once again and sir jo katha kahile mu taku present karuchi in a sir jo katha kahile mu kahuchi एवं करेक्शन कर देबे जदि मु भूल बुझीची धर एटा गोटे कॉइल अछि एंड ए सब मु आउट के चेंज कर दिए इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर जाउची मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन तुमे एपट को मूव कलो धर मु एपट को मूव कल ताहले करंट डायरेक्शन को पटे हबो हबो कि नहीं इंड्यूस करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ हबो कि नहीं जदी हबो केमिति जानिबा मु तो ऐड कली हाउ टू फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हाट इज द फॉर्मूला बिहाइंड एंड मेक श्योर दैट इट इज परपेंडिकुलर फॉर एग्जांपल Yes. The diagram is correct. The direction of the area vector is parallel but the surface of the area will be perpendicular to the field. So तमे मूव करूचो ए जिंसटा मु ऑलरेडी डिस्कशन करिछि सो सार सेटा पचारले तमे को ए मो डायग्राम को देखि को जे क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस ऑफ अ करंट एंड व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस यदि मु कहबी ताले त करंट बाहर कर दबो न कहि परले आउ किसी तुमको शुणा जीवनी यूरानियम तरफ तुमको आउ किसी शुणा हबनी हेलो रुद्र कौन अच्छी ना खाली ता नाटा लिखिच आरत्रिका शोइलणी कि रुद्र अच्छी से कौन कर तो बढ़िया पिला अरे मु कौन कही प्रीतम ए जो मुझे बुझेली गोटे प्रॉब्लम जो बुझेली गोटे कंडक्टर नहीं करी ताकू गोटे पार्ट ऑफ द लूप कली एवं एटा जदी हैला एक्स मु सब कहूनी डॉक्टर मिश्र खाली ताकू मने पके दउची एटा जदी एक्स हैला एटा is this length and v is the velocity with which this conductor is moving and b is the flux density b or the magnetic field. Sorry to interrupt. Say not this is not a single conductor. That case you have discussed, that is another case. In that case this was a U-shaped wire. It was a U-shaped wire thila. It was a straight conductor thila. CS straight conductor that was moving through the rails of this to the rail upare move करथला ना the velocity v ना सेटा अलगा थिला but here the whole coil is moving yes जे कोनोसी गोटा को आमे धर नबा जे कोनोसी गोटा because it is a uniform rectangular coil
जे कोनसी गोटा एटा को एटा कर दबा बिकॉज़ x पार्ट टा रहि जबो dx by dt रे dx by dt रे रहि जबो दैट becomes the velocity of that rectangular coil. So single conductor पई जो इक्वेशन हबो entire coil पई सही इक्वेशन हबो बोली मु भाबुची. I may be wrong. Yes, it will be slightly different. Please explain. No, any answer from the students or teachers? Teachers, Anil sir achandi? Anil sir aji nahanti. अच्छा तो এই কেস রে एक्चुअली प्रीतम कहबो कि ओम साई हां हां प्रीतम कहबो. अच्छा 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 सर मते लागु सर इंडक्शन हबो सर हबो अच्छा काहे कि तो सिलेक्ट टिक ठीक सम कोइ पारन सर आपन सर अच्छा 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 ओके ओके गुड ट्राई एक्चुअली এই কেস রে there will be no induced EMF because the area associated with the flux is remaining constant. Mind it, more question thela, it is moving inside the magnetic field. Kintu, ये जत्ते बड़े एक coil, एक rectangular coil टा magnetic field माने करे इटी सरी गला, एक जो बाहरी बार आरंभ करियो. ताले एतक एक जत्ते बाहर थुबो, एति की फर्स्ट बाहरिबो, ये गोटे एरिया हो. पुनी तापर एतक बाहरिबो, पुनी एतक बाहरिबो. So area linked with the flux will continuously go on changing. Flux जति की lines of field lines अछि ता भीतर हां एठी सार कर दे ए जो बाहरीबा अवस्था रे एतक पळेला वर्तमान एति की एरिया एसोसिएटेड ला पुनी बाहर के पळेबो आउट ए कम एरिया एसोसिएटेड ऑफ flux. So induced EMF will be produced in this case. बुझी पाला when it is inside the magnetic field rectangular coil अछि so there will be no magnetic field produced. बुझी हला कि I will ask another related question हला आउरी बुझियो हां but then suppose rectangular coil जगह रे मु circular coil यूज करिबी I will use a circular coil here and again it is moving inside the magnetic field. Yes, inside, not outside, completely inside. Then what will happen? Induced EMF will be produced or not? ना सर सब बड़े चिंता करो तार कॉज ता induced EMF काहे की प्रोड्यूस है बेसिक्स ता यस ना सर एथरो बदे होबनी हां ठीक काहे ना फ्लक्स चेंज होनी से रेक्टेंगुलर हो सर्कुलर हो फ्लक्स चेंज हो किंतु अगेन यू थिंक अबाउट द सेम थिंग सर जो ड्रॉ कर चली सेही सर्कुलर कॉइलटा बर्तमान मूव करके बाहर को आसीबा आरंभ करूची कांस्टेंट वेलोसिटी रे जाउची बाहर को ताले फ्लक्स चेंज हबो हबो कि नहीं आगे सर हबो सर हबो induced EMF प्रोड्यूस हबो कि नहीं Yes, sir. So yes, flux then a will rectangular change. coil or circular coil, if it is inside the magnetic field moving, then there will be no change in flux induced in production. But when it is going out or entering the magnetic field, whatever the case may be, continuously the area associated with the flux, it change hochi, then flux change haba, induced in production. But my question is now that एबे बुझियला फ्लक्स चेंज होची induced in production. बर्तमान क्वेश्चन होची हम पाखरे एभला दीटा कॉइल अछि एटा कांस्टेंट वेलोसिटी रे बाहर को जाउची एटा भी कांस्टेंट वेलोसिटी सर्कुलर कॉइल भी कांस्टेंट वेलोसिटी बाहर को जाउची एथरे भी इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हबो एथरे भी इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हबो बट दीटा का केस रे इंड्यूस्ड EMF विल बी कांस्टेंट और डिफरेंट कांस्टेंट ए इंड्यूस्ड EMF जो प्रोड्यूस है फार्मूला तबे बुझी लो माइनस d phi by dt or n d phi by dt whatever it is but then जो induced EMF प्रोड्यूस हबो कांस्टेंट अमाउंट रो प्रोड्यूस हबो ना वेरी करिवो जत्ते बळे ये जस्ट बाहरी की जाउची विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बाहर यस सर दीटा को ड्रॉ करले बता दे एटा जाउची एटा भी जाउची both are moving with constant velocity but induced EMF both केस रे प्रोड्यूस हबो both केस रे induced EMF कांस्टेंट हबो ना डिफरेंट हबो काई के Yes. Anybody watching in the outside also can answer. The outside बाहर देखो चलो. बहुत अच्छा है. एबे कम देखो देखिबे किंतु परे वर्तमान हमर पाखा पाखी 200 गतटा देखि सलेनी माने अच्छा ओके
सर मु देई परिमी हां को हाँ sure. सर हमर कांस्टेंट रहिबनी सर भेरी करिवो कारण एरिया टा हम धीरे धीरे हमर कमी कमी जीवो तेनु भेरी करिवो अच्छा इथरे माने रेक्टेंगुलर और सर सर्कुलर रे मत बोथ. लाउची कांस्टेंट रहे अच्छा कोउथरे कांस्टेंट रहइबो दीटा करे कांस्टेंट रहइबो ना सर दीटा करे कांस्टेंट दीटा करे कांस्टेंट रहइबो. आई कहूची कांस्टेंट रहिबो प्रीतम कहूची भेरी करिवो. अच्छा so both answers are correct but it will be different for different loops. You see rectangular coil रे जो एरिया टा चेंज होबो कांस्टेंट वेलोसिटी जाउची जो एरिया टा चेंज होबो दैट विल बी कांस्टेंट. बट सर्कुलर कोइले जो एरिया चेंज हो प्रथम एति की चेंज हो जीवो प्रथम तापर एति की जीवो एरिया बर्तन इंक्रीज करछि एपटे कमीबाटा इंक्रीज करछि तले आ भितरे जोटा डिक्रीज कर जीवो माने एठी समान नै ना एतक ए जो एरिया टा बाहरी बाहरी जीवो ए जो पोर्शन रे बेसी एरिया बाटा मूव करछि एति की किंतु एरिया टा बर्तन बेसी बाहरी जीवो तले द एरिया चेंजिंग एरिया एसोसिएटेड द फ्लक्स is different in circular coil. In the area associated flux will be constant. So rectangular coil रे ये तोले magnetic field बाहर भी जाउची induced EMF will remain constant. एथिरे induced EMF will be variable. जदियो दीटा को constant velocity जाउची. तो तुम बुझलो सर थैंक यू सर. ओके अच्छा आमे जदी इंस्टेंटेनियस को यूज करिवा सर जदी इंस्टेंटेनियस को यूज करिवा ताहले dx by dt ए जो हमें करथिले एटा सिना सीधा थिला x एटा t सो dx by dt आसिला ता जगह रे वेलोसिटी लगाइले एठी जदी इंस्टेंटेनियस यूज करिवा ताहले कोन होची एटा कर्व हे जाउची एटा कर्व हे जाउची तणु तार जो कंपोनेंट आसीबो डेफिनेटली चेंज होबो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मध्ये चेंज होची एज अ रिजल्ट there will be a change in the induced EMF and current. Am I correct? Yes, but एठी x माने हमें जो स्ट्रेट वेव बोलुचे सेटा धराउनी एठी एरिया लिंक Now, what? एरिया No. आरो केस रे कोन होची एठी गोटे वेयर अछि एठी गोटे वेयर अछि. Please listen. My question is, if we are taking this v as the constant velocity for the rectangular coil, then why not this constant velocity can be applied here for the circular coil to make E constant and I constant? This is motional EMF for a straight conductor of length L. Straight conductor, suppose this is a conductor, suppose this is U-shaped wire. एठी हम गोटे स्ट्रेट कंडक्टर रखि दबा से वायर टा बर्तन याडे मूव करछ ताले ए जो लिंकेज ऑफ एयर एरिया सेटा बर्तन बड़ी बड़ी होला. The wire is moving with a velocity v. Length of the wire is L. This is L. The total coil is not moving. Total coil is not moving. This straight wire is moving. L नहीं करियो ना. L is varying. देखो तुम yes, I understand. L टा is varying करछ ना. Yes. L टा varying करछ सेठी L टा constant थिला. Yes. तेणु definitely L vary कला माने E vary करिवो. Yes. Here there is none. Thank you. Thank you. Any other question or we shall close it? Or any interesting question by Dr. Mishra? If not, it is going to be 8:50. Let us close. Any other question you can ask? I have one thing to add here. That guys, the students, nobody has asked that we have studied. Sum up karuchi. We have studied DC motor. Just as a principle of DC, using a battery, you run in a particular direction, it moves. Now outside, current direction is same, and the rotation is also unidirectional. But inside, it is changing. Rotation is remaining same. Okay, and also we learned AC generator आगो पढ़िवा कथा ए जनरल प्रिंसिपल होची AC generator change होची एमती होची and we learned how slip ring use कले I we can generate AC generator चलला doesn't matter आम घर को AC आसुची आम कोन हमर ट्यूब लाइट कोन फ्लिकरिंग होची एते स्पीड रे आसुची से किछि असुविधा नाही किंतु आमे पढ़िलेनी केही पचारलेनी how the AC motor works.
सेटा बड़ हेले पढ़िबो कि एनीबॉडी हु कैन टेल मी हाउ हमर जो घर को लाइट आसुचे जो करंट आसुचे एसी फ्रॉम द मेन सोर्स ट्रांसमिशन लाइन रे लाइव वेयर हमको जानि छ सो आमे ताल तो पंखाटा एमिति एमिति होउनी तो पंखाटा तो प्रति हाफ टर्न रे एमिति पुनी नेक्स्ट एमिति तो होउनी सीधा चलची सो व्हाट प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व देयर टू मेक तमे देखिबो मोर जो ओरिजिनल वीडियो अछि सेथरे मु एक्सप्लेन करछि सो सेटा मु भाबितली कि पचारिबे बेली सेटा देखो एसी जनरेटर टा गोटे 3 फेज एसी करंट रे चले जो सार कहते डॉक्टर मिश्र एठी गोटे यू नो मैग्नेटिक फील्ड विल बी चेंजिंग प्रति हाफ रोटेशन रे ऊपर गोटे स्टार्टर थिबो रोटर थिबो स्टार्टर थिबो एटा एटा हला शाफ्ट ऊपरटा होची स्टार्टर तळे होची रोटर तेणु स्टार्टर you know the AC source producing a rotating flux magnetic field टा rotate करूची north pole south pole alternate होची प्रति ये रे turn रे गोटे full turn रे in an outer coil को कहते starter सी पुनी it will induce EMI ऊपर आधारित सी that will induce the current in the inner rotor भीतर टा होची rotor बाहर टा होची ये सेठी गोटे करंट AC करंट पास होची 3 फेज एमिति 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 बड़ हेले तुमको प्रोफेसर मिश्र बड़ हेले पढ़ेबे तेणु सी फल रे कोन होची जे मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन कांस्टेंटली चेंज होची नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल एज ए रिजल्ट दैट इज इंड्यूसिंग EMF and current in the मझी कॉइल जो रोटर एज ए रिजल्ट सेटा शाफ्ट संगे लगी जिनस को रोटेट करुची एंड दैट इज यूनिडायरेक्शनल रोटेट करुची सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी मोटर सो ट्रांसफार्मर कथा हमें आउ डिस्कशन करिबारे तुम पाई जीवो सब सेटा नाही सो आजिकार कार्यक्रम लास्ट टाइम एक्चुअली लास्ट टाइम गोटे क्वेश्चन पचराइतला जो इलेक्ट्रॉन सेटा तो के आंसर पाइलो की हां पुओ पिला माने प्लीज टेल आंसर यू इलेक्ट्रॉन एंड फायर करा होची कंटीन्यूअसली छात आड़ी तो पाखापाखी अच्छा कि टच करना तो जो मुव कर पाथ रे किसी चेंज हम कि अट्रैक्शन की रिपल्सन किसी हम कि गोटे एमती जनरल देखिले तो सेम डायरेक्शन रे अट्रैक्शन हवा कथा किंतु कोन हबो बिली तो पिला माने प्रीतम कहलो प्रीतम सर जदि दीटा को इलेक्ट्रॉन जो गन जो हमरो गुटे तेबे सेन हमरो सेन रिपल्सन करिवे कि जदि दीटा ऑपोजिट रे करा जाय ताले सेटा हमरो अट्रैक्शन करिवे काहे व्हाट इज द रीजन कोन पे भाबु छ सेटा मते लागुची ऑपोजिट हम डायरेक्शन रे फायर करले से माने जो हमरो मैग्नेटिक फील्ड तयारी करे से माने ता मझी जाय रे से माने ताकू कैंसिल करिवे आ बाहर से माने मिसिबे तेणु से बोधे निश्चिंत पाखु आसवे मत से लगुच मुझे भूल ही पार था मत से यहाँ लगुच अच्छा एनी अदर आंसर आउ की कहबो की अच्छा अच्छा प्रथम को दीटा करंट कैरिंग कंडक्टर एंती थिले सेम डायरेक्शन में करंट थिले अट्रैक्शन हुए ना रिपल्सन हुए सेम करंट सेम डायरेक्शन अछि करंट एंड सेम डायरेक्शन अछि तले से माने अट्रैक्शन होंती ना रिपल्सन होंती से रिपल्सन होंती सेम डायरेक्शन रे केमती रिपल्सन होंती मो एका करंट डायरेक्शन तो देखिलो ठीक है सा बरा सा सेम डायरेक्शन ले अट्रैक्शन खाता देखो सेम डायरेक्शन ले अट्रैक्शन ओके सेम डायरेक्शन ले करंट अट्रैक्शन कोन थरे एटा स्टडी करिवो निजे निज हाथ रे करी के सेटा करिवो जेमति मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस होची एई मैग्नेटिक फील्ड ए करंट के परपेंडिकुलर रखाइची तेनो आर फोर्स कोन हबो सेदी ए कंडक्टर रो मैग्नेटिक फील्ड रे ये रखाइची
यार डायरेक्शन कोन बाहर करी बटन पई एति की तम जे सेम डायरेक्शन तले अट्रैक्शन हो पाखु पळे आसीबे आ अपोजिट डायरेक्शन तले रिपल्सन एटा ला करंट पई तो चार्ज पार्टिकल पई मध्ये सेम यदि प्रोटॉन हेतंता पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ताले करंट ए डायरेक्शन हेतंता एटा करंट डायरेक्शन हेतंता ताले से माने अकॉर्डिंग टू ए प्रिंसिपल अनुसार हमर मैग्नेटिज्म अनुसार से माने सेम डायरेक्शन पई अट्रैक्शन हेतंता इलेक्ट्रॉन ए पटे ले करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन जा भी हो करंट सेम डायरेक्शन तो से मानकर निश्चित भाବରେ कोन हेतंता अट्रैक्शन को प्रिंसिपल अनुसार हमर ए प्रिंसिपल किंतु एक क्वेश्चन आंसर एक्चुअली दुईटा है केमती ना सपोज से माने स्लो स्पीड रे जाउतो सो सेते बेले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ता इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दीटा चार्ज पार्टिकल सेम नेचर रहले तांका भीतर रिपल्सन तो इलेक्ट्रॉन जले मूव करिवे तो कम स्पीड रे जाउछंदी ताले तांका भीतर रिलेटिव मोशन ता अछि वेलोसिटी तान सी रातो स्टेशनरी होडिया लागिवो तो से माने कोन करिवे इलेक्ट्रॉन भीतर रिपल्सन वर्तन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कांस्टेंट दैट इज 10 to the power 9 एठी जो मैग्नेटिक फोर्स रे कांस्टेंट था 4 pi into -7 तो सी ना +9 हेला के -7 तो मैग्नेटिक फोर्स था स्मॉलर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सेठी इलेक्ट्रो फोर्स था इफेक्टिव होबो सो इलेक्ट्रॉन रेज विल बी रिपेल्ड बट द मैग्नेटिज्म अनुसार करिबा जेतोले हाई स्पीड रे जातो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विथ वेरी हाई स्पीड सो इट जनरेट्स अ करंट सो सेही केस रे there will be attraction. Okay, when it generates a current, then there will be attraction due to magnetic force. So there will be attraction between the two electrons when they are moving in the same direction, opposite direction repulsion. If you specifically तुमको mention करिछि जे से माने stationary अछन slow जाउछन ताले से केस रे electrostatic force will एटी डोमिनेट कर जिवो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट कर ओके लेट अस साइन ऑफ हियर ओके बाय बाय साइन आउट हियर 7 तारिख रे परीक्षा हबो 7th संडे मॉर्निंग 7 o'clock will be the examination so be ready optics जहां में करजे optics and this electricity and electromagnetism right जो माने दबो केमिस्ट्री रे हां केमिस्ट्री भी यस जहाँ डिस्कशन होइछि सो बी रेडी मु इन्फॉर्म करबी हमर ये रे समस्ते किछि पिला बाहर पिला भी देबे बाहर माने हमर यूरेनियम पिला जो माने जॉइन करि नांती देबे भी इंटरेस्टेड टू जॉइन सो हबो ओके बाय 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 गॉड ब्लेस यू